بسم الله الرحمن الرحيم. I can't help studying. मैं मुतालिया किए बगैर नहीं रह सकती। Can't help. अगर किसी जमीले में नहीं रह सकता हो, नहीं रह सकता है, या न रह सकता हो वगैरह का अल्फाज पाए जाएं तवान का तर्जुमा कान टी हेल्प से करते हैं। नंबर 2 उनके बाद हमेशा हम फाल की पहली फॉर्म के साथ ing का इजाफा करते हैं। नंबर 3 अगर फकरा सवालिया हो तो हम कान टी को शुरू में लगा सकते हैं। नंबर 4 अगर फकरा माजी का हो तो हम कान टी की बजाय कुडन टी इस्तेमाल करते हैं। Subject plus can't help plus verb plus ing. हम वहां जाए बगैर नहीं रह सकते। We can't help going there. वो पैसे खर्च किए बगैर नहीं रह सकती। She can't help spending money. हम बाजार जाए बगैर नहीं रह सकते। We can't help going to bazaar. मैं इसे बात किए बना नहीं रह सकता। I can't help talking to him. वो यहाँ आए बगैर नहीं रह सकता। He can't help coming here. क्या तुम पूछे बगैर नहीं रह सकते? Can't you help asking? क्या वो मजाक किए बगैर नहीं रह सकता? Can't he help kidding? वो हंसे बगैर नहीं रह सका। He could not help laughing. वो चाय पिए बना न रह सका। He could not help taking tea. वो इसे अतला किए बनाना रह सके। They couldn't help informing him. Exercise. Now do it. Enjoy your lesson. Thank you very much and do not forget subscribing, liking and sharing. Improve your vocabulary visually on YouTube. It is all for you.